Hello and good morning to all of you. Let's begin for the day. I welcome you all to the Raftar Current Affairs series of Alpais Academy. Okay, and we take the content from all of the newspaper. Okay, now the first news is that the CSR rules has been a new CSR mandate to increase compliance burden for India Inclusive. India Inclusive is nothing that is the corporate sector. Okay, now what the Ministry of Corporate Affairs has done is, अच्छा CSR जो रूल होते हैं ना वो MC के अंडर आते हैं, रिमेंबर दैट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ठीक है, नाउ उसने क्या किया कि कॉर्पोरेट्स को जो है एक मैंडेटरी, दे हैव टू फाइल अ मैंडेटरी रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट अबाउट देयर CSR एक्टिविटीज़। ओके, एंड you know what is CSR? Corporate social responsibility. India is the only country which has mandated or which has a specific law for CSR. Okay, it is the first country in the world and where the CSR is mandated, that is Companies Act 2013. Okay, thus, and also the for the non-compliance of CSR rules, it is a civil crime. Okay, not a criminal offense but a civil crime. Okay, and there is no specific tax exemptions has been extended to CSR expenditure. Okay, तो बस 3-4 पॉइंट याद रखने कि now you have to file a comprehensive report. The second thing is that it is mandated in Companies Act 2013. Okay, and it was actually embedded in 2014 by way of amendment in Companies Act 2013, but not a very big issue that is. Okay, and it is India is the first country, so remember that. How do they monitor? They monitor by MCA21 portal. Ministry of Corporate Affairs का एक MCA21 portal है. Okay, so that is the ultimate, from where you can see the CSR activities. Okay, now draft red herring prospectus. कुछ नहीं होता. When you have to issue a shares in the share market, what you have to do is you have to submit a draft or a red herring prospectus with the SEBI, in which you have to mention many details. Okay, and that's a very confidential report. Okay, and nothing, the government has has submitted the red herring prospectus with the SEBI just for the 5% of its share in LIC of India. No, LIC IPO is coming very soon. Disinvestment, under disinvestment policy of India. Okay, so it is nothing, a document which one has to submit for the it is the initiation of to get into the equity markets. Just quickly we'll see about what is SEBI. It is owned by the government of India. Okay, and it is a statutory body. It was established 1988 and given statutory status through SEBI Act 1992. ठीक है, and people preparing for SEBI, you should remember this. So SEBI was established 1988 but it was given statutory status in 1992. Okay, now what it does is it regulates securities and commodity markets in India. Okay, someday we'll talk at length about what is securities and what are commodities. Okay, now there are क्वाजाई का मतलब होता है कि हाफ कुछ क्वाजाई लेजिस्लेटिव, क्वाजाई जुडिशियल, क्वाजाई एग्जीक्यूटिव. ओके, तो इन्वेस्टिगेशन करना, इन्फोर्समेंट करना, रूलिंग्स पास करना, ऑर्डर्स पास करना, रेगुलेशंस बनाना. आज ये मेमो आ गया, आज ही आपने पढ़ा होगा कि सेबी का ये ऑर्डर आ गया. ठीक है, यू हैव टू कंप्लाई विद इट. RBI के भी ऐसे ही होता है. तो बैंक्स आर अंडर द RBI and the security markets is under the SEBI. Okay, now ISRO has launched 3 satellites, that is EOS. इससे खुद ही पता लग जाएगा, that is Earth Observation Satellite 4, Inspire Sat 1 and INS-2D satellites. Okay, what is EOS for? It is a Earth Observation Satellite. It is in sun synchronous polar orbit. Okay, what it will provide is weather conditions, forestry, agriculture, hydrology. Hydrology क्या हो गया? Related to water. भाई यहाँ ये एरिया है, यहाँ पर कैसा कैसा पानी है, यहाँ पे 2 फीट तक पानी है, यहाँ 6 फीट तक पानी है. ठीक है, यहाँ पानी है ही नहीं. तो दिस काइंड ऑफ डाटा इज collected by EOS, that is Earth Observation Satellite. What is Inspire Sat 1?
and spiral sets one is nothing, it is, there is two instruments, thermosphere, then there is ionosphere, to studies ionosphere dynamics and the sun's coronal heating process. इंस्टेड 2D कुछ नहीं, थर्मल इमेजिंग कैमरा है उसके अंदर टू एक्सेस लैंड एंड वाटर सरफेस टेम्परेचर एंड थर्मल इनर्शिया एट डे एंड नाइट. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस साइट का नाम याद रख लो और कंसेप्ट याद रखना है यार. देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें, एंड वी आर सून कमिंग विद दिस शॉर्ट वीडियोस, वी विल छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करेंगे. ई रूपी RBI का है. अब ई रूपी क्या होता है, एक टाइप का डिजिटल रूपी, डिजिटल मनी है, ठीक है. इसमें कुछ नहीं होता है, आप पैसे पे करोगे 10 रुपये RBI को, RBI आपको 10 रुपये का वाउचर दे देगा बस, ठीक है. उससे क्या होता है कि उसमें फर्जीवाड़ा कम हो सकता है. यू गो टू अ मर्चेंट, यू रिडीम दैट वाउचर, ठीक है. इंस्टेड ऑफ गिविंग 10 रुपीज़ टू हिम और हर, यू कैन रिडीम दिस वाउचर, ठीक है. तो व्हाट हैज RBI हैज डन इज कि उसकी 10K से लिमिट 1 लाख कर दी है अभी, बस कुछ नहीं है, ठीक है. तो ई रूपी के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं क्योंकि इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. ओके, तो व्हाट इज़ ई रूपी? इट इज़ अ डिजिटल पेमेंट, इट इज़ अ क्विक रिस्पॉन्स कोड. ओके, QR कोड भी हो सकता है वो, और SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है ना. QR कोड तो आपको पता ही है, ऐसे ऐसे कुछ देखा होगा आपने, है ना. स्ट्रिंग SMS स्ट्रिंग ई वाउचर क्या होता है कि आपको कोड भेज दिया मोबाइल पे, हाँ, कोई सा भी उस टाइप का वाउचर दे दिया आपको, कुछ नहीं है. डेवलप्ड बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है. सो ये इनका कोलैबोरेशन था, उनके साथ बनाया, बट मेन आदमी कौन है इसमें? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है. इट डज नॉट रिक्वायर बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट, दिस इज बैंक, ओके, sorry for the mistake, bank account, and works in basic form. Okay, so India is such a diverse and vast country that we have to make policy and everything from from a basic to a very top notch technocrat. Okay, from a illiterate to a very top notch technocrat. So such a beautiful work is being done by our civil servants. Okay, so what is doxing? Doxing अभी मस्त है, कुछ नहीं है. डॉक्सिंग क्या होता है कि आप आजकल देखो आप कितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी फेसबुक इंस्टाग्राम पे पड़ी होती है, कुछ नहीं होता. उसका यूज़ करके जो होता है, ठीक है, मैलिशियस इंटेंट से उसको रिवील करना, ठीक है, रियल आइडेंटिटी ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. तो दैट इज़ द डॉक्सिंग. एंड मेटास, व्हाट इज मेटास? फेसबुक का भी जो नया प्रोग्राम आया, दैट इज कॉल्ड मेटा. मेटास ओवरसाइट बोर्ड हैज सजेस्टेड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टू मेक स्ट्रिक्ट डॉक्सिंग रूल्स. ओके, now there is a big concern about privacy, all these things now has taken the precedence over many things. So you have to see, but the concept of doxing, sometimes what will happen is that in exam doxing will appear and you will have no clue. So just it is publishing and analyzing others personal information on the internet with a malicious intent that can reveal the person's real identity. Okay, so there are short news, you just go through them. Modified elephant, ऐसा कुछ नहीं है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड एलिफेंट है, कुछ नहीं है. दिस इज अ हैकिंग ग्रुप. ओके, एंड एक रिपोर्ट आई है इस पर, तो नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रिवर देविका कहाँ है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है पता है आपको? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है आपका जम्मू एंड कश्मीर में. ओके, आफ्टर यू क्रॉस जम्मू एंड उधमपुर कम्स. आर्मी का बेस भी है यहाँ पे, एंड आर्मी का एविएशन स्क्वाड भी है यहाँ पे, मेरे ख्याल से नहीं, पक्का. और उधमपुर में देयर इज़ आर्मी एविएशन स्क्वाड. ओके, देविका रिवर कुछ नहीं है, ओरिजिनेट होती है वहाँ पे एक डैम बनना, तो दैट वाज इन न्यूज़. तो जस्ट फॉर द पासिंग फ्रेंड, रिवर देविका इज इन जम्मू एंड कश्मीर. ओके, नाउ पर्सन इन न्यूज़ वाज महाराजा सूरजमल, ठीक है. ही वाज फ्रॉम भरतपुर डायनेस्टी. ही इज ऑल्सो नोन एज द प्लेटो ऑफ द जाट पीपल. He has written Jat Odysseys, okay, and his contribution was that he united various factions of Hindus and Muslims and kept them together. We should also strive for the same. He believed that the humanity is the only religion of man, which should be our motive also. Okay, and he personally identified problem of farmers and introduced reforms to rectify them. एक लोहागढ़ फोर्ट है वो भी इन्होंने बनाया था, ठीक है. नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बट आजकल देखो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है. सो प्लेसेस इन न्यूज़, यू गो थ्रू, सी द मैप, ठीक है. वेजिट मार्शल आइलैंड्स, पापुआ न्यू गिनिया, गुआम, पलाऊ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट
समटाइम, यू नो, मैप देखते रहा करो, किस दिन को 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके 4 मार्क्स बन जाएंगे, एंड यू क्वालिफाई प्रीलिम्स, देन यू विल रिमेंबर मी, डोंट वरी, ठीक है। और ये मस्त जो लाइनें दिखती हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये क्रॉस करती रहती है, तो डरना नहीं है इसको देख के, अपने को बस लोकेशन देखनी है। तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू ब्यूटीफुल पीपल, टेक केयर, सी यू टिल देन, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।